Hello students, this is experiment number 7 to study distribution of stomata on upper and lower surfaces of leaf and to calculate the stomatal index. Write objective of the experiment first, that is to study the distribution of stomata on upper and lower surfaces of leaf and to calculate the stomatal index. Then write materials required for the experiment. We need fresh leaf of petunia, which is a dicot plant, and leaf of lily, which is a monocot plant. And we require forceps, needle, brush, watch glass, petri dish, glass slide, cover slips, saffronin stain, glycerine and water. Theory of the experiment. Stomata are tiny microscopic structures present in leaves of all flowering plants. This you can see in the diagram also. Number and distribution of stomata per unit area is variable in leaves of different plants. स्टोमेटा का नंबर और इनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग देखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द लीव्स ऑफ मोस्ट डाइकॉट प्लांट्स पोजेस स्टोमेटा ओनली ऑन लोअर सरफेस. डाइकॉट प्लांट्स के लीव्स में स्टोमेटा लोअर सरफेस पर पाए जाते हैं. हाउएवर, लीव्स ऑफ सम मीजोफिटिक प्लांट्स, कुछ मीजोफिटिक प्लांट्स जैसे पोटैटो, बीन एंड पिटूनिया, they possess stomata on the upper surface also. But in monocots, stomata are distributed equally on two surfaces of leaves. Monocot plants की leaves में stomata दोनों surfaces पर equally distributed होते हैं. Now, see the structure of stomata. See the diagram. A typical stomata consists of a pair of guard cells and an aperture in the center, and this aperture is called as stomatal aperture. Come to the steps of procedure. First, take out epidermal peel from upper and lower surfaces of petunia leaf. और इन दोनों पील्स को सेपरेट वॉच ग्लास में रख लीजिए जैसे पिक्चर में दिखाया गया है. पील्स को स्टेन कीजिए बाय यूजिंग saffronin stain. For this, add saffronin drops in the watch glass only. Then take peels and mount them in glycerine on separate slides. दोनों peels की slides को तैयार कर लीजिए ग्लिसरीन डालकर. Then cover the peels with cover slips and observe them under the microscope. Now count the numbers of stomata and the number of epidermal cells in the peels of both upper and lower epidermis of the leaf appearing in the microscopic field. जितना पार्ट माइक्रोस्कोप में पील का दिखाई दे रहा है, इसमें स्टोमेटा का नंबर और एपिडर्मल सेल्स का नंबर काउंट कर लीजिए और इनको नोट कर लीजिए. See the upper diagrams. These diagrams are showing the peels of petunia leaf. यहाँ आप अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट स्टोमेटा एंड एपिडर्मल सेल्स को देख रहे हैं. इनका नंबर आपको काउंट करना है और नोट करना है. सिमिलरली, प्रिपेयर द स्लाइड्स ऑफ द पील्स ऑफ लिली एंड काउंट द नंबर्स ऑफ स्टोमेटा एंड नंबर्स ऑफ एपिडर्मल सेल्स इन द माइक्रोस्कोपिक फील्ड. लिली प्लांट की पील्स भी आप इसी तरह तैयार करेंगे. नीचे डायग्राम में आप लिली लीफ की अपर एंड लोअर एपिडर्मिस का डायग्राम देख सकते हैं. यहाँ पर भी आपको स्टोमेटा एंड एपिडर्मल सेल्स का नंबर काउंट करना है और नोट करना है. नाउ राइट द फॉर्मूला यूज्ड टू कैलकुलेट स्टोमेटल इंडेक्स. इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टोमेटा S डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टोमेटा प्लस नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स S plus E multiply by 100. After this, make observation table and write all the values under the headings: name of plant, number of epidermal cells E, number of stomata in the microscopic field S in upper epidermis and in lower epidermis, and finally
calculate stomatal index by putting values of S and E and write the value in the last column. Write the results for leaf of petunia. Stomatal index in lower surface of leaf is 27 and stomatal index in upper surface of leaf is 13. It shows that in petunia, number of stomata is more in the lower epidermis and only few stomata are present in the upper epidermis. For leaf of lily, stomatal index in lower and upper epidermis of leaf is same, that is 38. It shows that the leaf of lily has almost equal number of stomata in both the epidermis. Draw these diagrams in your practical notebook using sharp pencil. Note one thing, in dicots the guard cells are bean shaped and in monocots guard cells are dumbbell shaped. Here is a question for you. Calculate the stomatal index of the given upper and lower surfaces of leaf of a plant and then select where you can find it in dicots or in monocots. Precautions to be taken. First, the curling of leaves should be avoided. Number 2, always use brush to transfer the peel from watch glasses to the slide. Third, excess of glycerin should be removed by using blotting paper. So that's all for today. Thank you very much for staying with me. Subscribe the channel to get the information about my new video. Thank you so much.